class, we are starting with the next revision of direct and indirect relationship. That is direct and indirect variation. And the first question is, a car travels 432 kilometers on 48 liters of petrol. A car travels 432 kilometers on 48 liters of petrol. How far would it travel on 20 liters of petrol? How far would it travel on 20 liters of petrol? First tell me, this question is a direct relation question or inverse question, indirect relation question? Direct. Direct. Very good. So now solve it and tell me how much. Question repeat करें? No ma'am, हो जाएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है. इसका मतलब पिछले वाली क्लास को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही थी, लेकिन उनको क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, खाली कह रहे थे मैम आवाज नहीं सुनाई पड़ रही. हमें लगा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमें रुला रहे थे, तो हमारी आवाज सुनाई पड़ रही थी उनको. ओके, नो प्रॉब्लम. Ma'am, the question is how far would it travel on 20 liter of petrol? Yes, 20 liters of petrol पे कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा? Okay, ma'am. इजी क्वेश्चन है बेटा. Ma'am 180. Ma'am 180. Ma'am 180. Ma'am 180. Very good. 180 kilometers. Very good. चलो, I am happy with this class now. The previous class has demoralized me. पिछली क्लास ने हमें डरा दिया था. Okay. If 40 meters of a cloth cost rupees 1940, if 40 meters of a cloth cost rupees 1940, how much meters can be bought for 727.5? 727.5. If 40 meters of a cloth cost rupees 1940, how many meters can it be bought for 727.5? Ma'am 15. Confirm? Yes ma'am. Yes, ma'am, Confirm. 50. Very Ma'am, good. confirm. 15. Very good. 15. Okay. Next question. If 56 men can do a piece of work in 42 days, if 56 men can do a piece of work in 42 days, how many men will do in 14 days? If 56 men do a work in 42 days, how many men will do in 14 days? I hope you are not using calculators. I hope you are not using calculators. Yes ma'am. 56 men. Na, galat. You have to tell me. Wrong. Ma'am, I am Ma'am, not answering the 162. question, ma'am. Ma'am 162. 162. Okay. Somewhat is not correct. थोड़ा गड़बड़ है. फिर से कैलकुलेट करके देखो. Ma'am 56 men in 42 days. Then how many men will Yes. do the same work in 14 days? Yes. थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो. कहीं गड़बड़ है कैलकुलेशन में, थोड़ी गड़बड़ है. चेक करो. Ma'am 180 men. ना, पहला वाला आंसर आसपास था लेकिन गलत था. कोशिश Ma'am, करो. हाँ बोलो. ma'am 168. 168. वेरी गुड. तभी तो हमने कहा आसपास पहुंच गए हो, लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं है. 168. वेरी गुड. चलो एक और क्वेश्चन करो.
Shalu cycles to her school at an average speed of 12 kilometers per hour. Shalu cycles to her school at an average speed of 12 kilometers per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. It takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, if she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? What should be her average speed? डायरेक्ट है कि इनवर्स है? इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? पहले ये बताओ. Inverse, ma'am, indirect. इनवर्स है. वेरी गुड. चलो इतना आधा रास्ता कवर कर लिया. मैम अब कर. हाँ बोलो. 16 किलोमीटर पर आवर. मैम 16 किलोमीटर पर आवर 16 है। किलोमीटर पर आवर. 16 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. 16 किलोमीटर पर आवर. अच्छा एक और क्वेश्चन करो. करोगे ना? यस Yes, मैम। मैम बिल्कुल. Okay. A private taxi charges a fare of rupees 260. A private taxi charges a fare of rupees 260 for a journey of 200 kilometers. For a journey of 200 kilometers. How much would it travel for rupees 279.50? How much would it travel for rupees 279.50? A private taxi charges a fare of rupees 260 for a journey of 200 kilometers. How much would it travel for rupees 279.50? Ma'am, Hmm? ma'am 215 kilometers. 15. Yes, ma'am, 215. 15 या 50? मैम 2150। 215. Ma'am Ma'am, 215. 215. Ma'am मैम 215। 215. Yes, correct. 215. Very good. 215. Correct. अच्छा Yes. अब सुनो दूसरा क्वेश्चन सुनो. The amount of extension in an elastic spring varies directly to the weight hung on it. क्वेश्चन क्लियर कर दिया है पहले ही उन्होंने. Amount of extension in an elastic spring varies directly as the weight hung on it. ठीक है. If a weight of 150 gram produces an extension of 2.9 centimeters, if a weight of 150 gram produces an extension of 2.9 centimeters, then what weight would produce an extension of 17.4 centimeter? Then what weight would produce an extension of 17.4 centimeter? समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. करो. मैम 17.4। 17.4। Ma'am, 900. Ma'am, Ma'am 900 grams. Yes, ma'am 900 grams. 900 मैम grams. क्वेश्चन आज बात क्या 900. Very good. 900. Yes, it's 900. Good. I'm happy. Okay, let's take one more question. Okay, let's take one more question which you feel interesting also. Okay. 1,000 soldiers in a fort had
enough food for 20 days. 1,000 soldiers in a fort had food for 20 days. But some soldiers were transferred to another fort and the food lasted for 25 days. And the food lasted for 25 days. How many soldiers were transferred? How Ma'am, 10 many? soldiers were transferred. 10 soldiers. गलत. No, ma'am. Ma'am, 200 soldiers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे बताओ, जल्दी समझाओ. उसका आंसर कैसे गलत आया है ना, इसको समझाओ कैसे हुआ. Ma'am, 1000 multiplied by 20 is equal to 1000 minus 25 आ गया. तो हमने पहले x फाइंड कर लिया, कितने चले गए थे, कितने चले गए, फिर डिफरेंस. अगर हमने कितने लोगों के लिए जाने के बाद कितना बचा, कितने लोग बचे, 800 लोग बचे. अब 800 में 1000 में से अगर 800 चला जाए तो कितने लोग हुए, 200. 200. इजी था. Yes, ma'am. Okay. 120 men had food provision for 200 days. 120 men had food provision for 200 days. After 5 days, 30 men died due to epidemic. After 5 days, 30 men died due to epidemic. How long will the remaining food last? How long will the remaining food last? Sorry. Ma'am, can you repeat, ma'am, the last portion? Last line. Okay. फिर से पूरा ही पढ़ दे रहे. 120 men had food provision for 200 days. After 5 days, 30 men died due to epidemic. How long will the remaining food last? Ma'am, 260 days. Ma'am, 260. 260 days. Very good. 260. Yes, ma'am. अच्छा, अब ये वाला करो. Raghu has enough money to buy 75 machines worth rupees 200 each. Raghu has enough money to buy 75 machines worth rupees 200 each. How many machines can he buy if he gets a discount of rupees 50 on each machine? How many machines can he buy if he gets a discount of rupees 50 on each machine? Ma'am, 500. No, ma'am. No, ma'am, Acha. 500. One second. No, ma'am, 500. Then what? How many machines? Use the logic. Ma'am, उसका discount कितना? 50%. 50. 50 Ma'am, rupees. 50 Rupees 50. rupees. Rupees 50. 50 रुपए. Okay, ma'am. Okay. उसकी कॉस्ट हो गई 150 रुपए एक की कॉस्ट हो गई. राइट, ये एकदम सही समझा है. 100 रुपए, 200 का एक मशीन का हाँ? कॉस्ट 200 था. वही तो मैम, उसको माइनस करा 150 है तो मैम 75,000 मतलब सॉरी मैम, सॉरी 15,000 थे ना उसके पास. मैम 100. हड़बड़ी मत मचाओ. नो मैम. दिव्यांशु 100. हड़बड़ी नहीं मचाओ. दिव्यांशु हड़बड़ी नहीं मचाओ. पहले लिखो, समझो, फिर आंसर बताओ. मैंने टाइम दिया है. मैंने ऐसा नहीं कहा कि 2 मिनट में आंसर देना है. मैंने कहा है. यस मैम. नो मैम. नो Ma'am, 85. हाँ. Ma'am, 85. ना, Ma'am, 100. किसका आया 100? Ma'am, मेरा. नाम दो. मेरा नाम बोलो. आदित्य. अरे ओके, 150 होगा. वेरी गुड. 100 हो जाएगा. 100 होगा. समझा दो बेटा अपने फ्रेंड्स को. समझाओ अपने फ्रेंड्स को. अरे मैम आ गया. Yes, ma'am. मैम आ गया. 75 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे. 75 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर उसके बाद 150 को 150 मैम हो जाएगा. 75 into 200 हुआ मैम 15,000. मैम 15,000 अपॉन 150 हुआ. 150 किया मैम, आ गया 100. समझ में आया? यस मैम. समझ में आया? ओके. और क्वेश्चंस दे.
Yes, चलो। ma'am. ओके, और क्वेश्चन है, रुक जाओ, ढूंढने तो दो ताकि रिवीजन करके भी मजा आए। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, ये वाला कैसे होगा बताओ? 68 boxes of a certain commodity requires a shelf length. 68 boxes. 68 Yes, ma'am. boxes of a certain commodity. धीमे धीमे बोल रहे, सुनो। 68 boxes of a certain commodity requires a shelf length of 13.6. 13.6. How many boxes of the same commodity? How many boxes of the same commodity would occupy a shelf length of 20.4 meters? 20.4 meters. मैम 68 कितना कर रहे थे? 13.6 सेंटीमीटर Meter. मैम मीटर। एक सेकंड, मीटर। कितनी कितनी मैम? एक वो बाद की वाली फिगर मैम क्या थी? एक सेकंड। मैं फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन। 68 Yes, ma'am. boxes of a certain commodity requires a shelf length of 13.6 meter. How many boxes of the same commodity would occupy a shelf length of 20.4 meter? मैम आ गया। Ma'am, 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 मैम ma'am, आ गया। मैम Ma'am, 68 upon 20.4 upon 13.6. यस तो मैम। कितना आंसर आएगा? आंसर बताओ। 90 102. 102. 102। वेरी गुड। बताओ फिर, एशर बताओ कैसे आया 102? समझाओ सबको। Ma'am, 68 multiplied by 20.4 upon 13.6. मैम पॉइंट काट लेंगे, फिर 68 2 से 136 और मैम 204 को 2 से काट लेंगे। ठीक है, समझ में आया सबका? जिनका गलत आया है, कहाँ गलती की है? यस ये मैम। सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक थी मैम। यस मैम। राइट, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, लेकिन एग्जाम में ये कैलकुलेशन मिस्टेक सिर्फ 0 बैठा देगी, पता है ना? मैम मोर क्वेश्चन। हाँ, गिविंग। लेट मी फाइंड, ढूंढने तो दो। अच्छा, a worker is paid ₹200 for 8 days. 8 days work. A worker is paid ₹200 for 8 days work. If he works for 20 days, how much will he get? How much will he get? मैम 500। Hmm? मैम वर्कर इज पेड 200 फॉर 8 डेज। मैम 500 होगा। Ma'am, 500. 500 मैम 500। Yes, ma'am. 500. बेटा डेज पता करना है, 500 दिन कैसे हो जाएंगे? मैम दे दिए आपने। डेज दे दी मैम, आपने कहा कि 8 डेज। मैम आपने हाँ। 8 डेज में 200 किया तो 20 डेज में कितना मिलेगा? वही 500। गुड, ₹500। मेरा क्वेश्चन मैंने ऊपर नीचे हो गया था, पढ़ते पढ़ते ऊपर नीचे हो गया था क्वेश्चन। यस मैम। राइट, 500 मेरा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया था। एक्चुअली Yes, ना, ma'am. दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहे थे ना, दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहे थे। अच्छा, अब ये सुनो, जिसपे तुम लोग गड़बड़ करते हो इसलिए सुनो अच्छे से। अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. Amit can do a piece of work in 4 days. Sumit can do a piece of work in 6 days. समझ में आया? यस मैम आ रहा है मैम, आगे आगे। यस Do मैम। a piece of work in 4 days. Sumit can do it in 6 days. Both Amit and Sumit work together for how many days? मैम एक सेकंड। करो ना, 1 सेकंड 2 सेकंड क्या क्या चक्कर है, आराम से करो। मैम 5/12। 2/5 2 days 2/5 यस मैम। 2 days 2/5 2 days 2/5. 2 whole 2/5 days. 2 whole 2/5 days. यस ओके, समझा दो। यस मैम। पहले मैम अमित का 4 डेज का वर्क था तो उसका 1 दिन का होगा 1/4। सुमित का 6 डेज का था तो उसका 1 दिन का होगा 1/6। फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो उनके 1 दिन का हो गया 5/12 और उनका अगर टोटल निकालना है तो उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 12/5। फिर उसे उसमें चेंज कर देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 2 whole 2/5। यस मैम। इजी था पहला Yes, क्वेश्चन, ma'am. इसलिए इजी दिया। पहला Yes, क्वेश्चन ma'am. इसलिए इजी दिया, ठीक है? यस मैम। सुनो,
Together, Chotu and Neetu plow a field in 4 days. Together, Chotu and Neetu plow a field in 4 days. Neetu alone takes 6 days to plow the same field. Neetu alone takes 6 days to plow the same field. In how many days can Chotu alone plow the field? Huh? Ma'am, 12 days. 12. मैम 12 days Ma'am, 12 12 days days. 12 मैम days 12 Yes, days ma'am. मैम समझाओ। 1/4 भाई सेम और सीधी सीधी 1/4 minus 1/6 मैम उनका एलसीएम आ गया 12 तो 4 divided by 12 3 3 divided by 12 2 3 minus 2 क्यों किया? 1/2 माइनस क्यों किया? कर देंगे माइनस क्यों किया? समझाओ। मैम मैम, क्योंकि हमें वो दोनों का बराबर वाला दिया, मैम वो दोनों का Yes. मिला के दिया है ना। यस यस मैम मैम पहले दोनों का मिला कर था 1/4 नीतू का घटा दिया तो फिर- मैम उसका आ गया Yes. इस क्वेश्चन का उल्टा था, जो पहला वाला क्वेश्चन किया उसी का उल्टा था, राइट? यस Yes, मैम मैम वन मोर मैम ओके, And move. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट No, क्वेश्चन ma'am. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके मैम A and B can do a piece of work in 12 days. A and Yes, B can do a piece of work in 12 days. B Yes, ma'am. and C in 15 days. C and A in 20 days. A and B can do a piece of work in 12 days. B Yes, and ma'am. C in 15 days. Yes, C ma'am. and A in 20 days. Yes, In ma'am. how many days will they finish it together and separately? In how many days will they finish it together and separately? Together भी find करना है, separately भी। पहले together निकाल के बताओ कितना? Yes, ma'am. 12 5 जा 80 आ गया यहाँ पे एलसीएम 12 divided by 80 इक्वल होने को नहीं मैम एक सेकंड में मैम टुगेदर इन 5 days No. मैम एक सेकंड हो ना, उसने मना किया। दो 5 10 60 60 into 2 120 आ रहा है इसमें 10 plus 15 divided by 120 6 plus 6 is equal to 10 में 6 16 6 16 6 22 120 इसको काट दे 11 ये कटा 6 11/60 divided by 2 मैम 11/30 है टुगेदर का Wrong. मैम हाँ, मैम क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा। यस मैम A and B can do a piece of work in 12 days. 1 2, ठीक है? B and C in 15 days. 1 5. C and A in 20 days. 2 0. In how many days will they finish it together and separately? मैम 9/30 Wrong. टुगेदर Wrong. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तुम लोग की। यस मैम मैम इसमें इन तीनों को सबसे पहले 1 डेज वर्क मतलब इन तीनों का 1 डेज वर्क मिला के ऐड करेंगे और फिर मैम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मेथड तो पता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। तो क्या मैम कैलकुलेशन मैम मिस्टेक? 20 days लगेंगे उनको मैम 20 यस मैम 20 आ गया 20 days नहीं। लगेंगे 20 days गलत, गलत। कैलकुलेशन मिस्टेक और मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स गलत कर रहे हो। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी गलत लगा रहे हो। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी ये है तो इंटीजर्स ही ना, इंटीजर्स की डिवीजन की प्रॉपर्टी को गलत लगा रहे हो। मैम मेरे 10 days कितना दे? 10 days 10 days। हिंट समझना कहाँ गलती हो रही थी?
Yes, ma'am. समझ गया अभी जस्ट समझ आया। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी को गलत लगा रहे थे, इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी है वो गलत लगा रहे थे। 10 डेज, तो 10 डेज हो गया टुगेदर, तो इस तरीके से बाकी का आप निकाल लोगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी का निकाल निकाल लो। ओके, सो बाकी का आप निकाल लीजिएगा। आई एंड माई क्लास हियर, थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय Thank मैम। you, ma'am.